Okay, let us start with the new chapter, that is ratio and proportion. तो कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे. रेशियो एक्चुअल में, if we see ratio, so it is way of comparing the things or comparing the quantities. हम अक्सर सुनते हैं, जैसे हाँ, फॉर एग्जाम्पल pocket money of two friends A and B are in the ratio, let's say 4:3. So this gives us the comparison कि किसकी पॉकेट मनी ज्यादा और किसकी पॉकेट मनी कम है. हाँ, बट ये अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है हमें, बट ये हमें बता रहा है कि ये 4 and 3 की रेशियो में है. दिस 4 and 3 कुड बी एनीथिंग. एक कॉमन मल्टीपल लेंगे, उस कॉमन मल्टीपल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दैट कॉमन मल्टीपल कुड बी 2, इट कुड बी 10, इट कुड बी 100, इट कुड बी एनीथिंग. तो इट कुड बी 8 and 6, it could be 40 and 30, it could be 400 and 300, it could be 4000 and 3000, it could be anything. बट अगर हमें इसकी वैल्यू के लिए जाना होगा तो हमें एक कॉमन मल्टीपल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कॉमन मल्टीपल इनको इसकी वैल्यूज तक पहुंचाएगा. राइट. तो मैं बेसिकली जब मैं रेशियोज की बात करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दे आर कंसिडरिंग सम पार्ट्स. अब रेशियो को एक्सप्रेस हम लोग कैसे करते हैं? हम इस तरह से भी करते हैं. दिस इज नंबर वन वे, दिस कुड बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे. और इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, a/b is equals to 4/3. It could be expressed as a and b equals to 4 and 3. So it can be expressed in any of the way. Rather, ये हमारे पास जो इसका न्यूमरेटर है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट. खैर ये जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू, दिस इज कॉन्सिक्वेंट. तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इनको बोला जाता है. एंड हमारे पास जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं. दे आर नोन एज टाइप्स ऑफ रेशियोज. तो अगर हम लोग बात करें कि इफ A and B are some given ratio, then with respect to these two ratios we can find other ratios, like we say it as duplicate ratio, and that will be given to us as a square is to b square. Then duplicate ratios, this is just for information, we are writing it, a cube is to b cube. Subduplicate ratios, this is square root of a, and
दिस इज a raised to power 1/3 is to b raised to power 1/3। अभी ये हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ रेशियोज, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनवर्स रेशियो। ये हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/a is to 1/b, and this thing could be written as b is to a। लेकिन ये हमारे पास दो पैरामीटर्स के लिए है कि हमने इसको उल्टा लिख दिया, a is to b is written as b is to a। ठीक है, तो हमारे पास फॉर थ्री पैरामीटर्स या फॉर थ्री टर्म्स a is to b is to c, inverse ratio is 1/a is to 1/b is to 1/c। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम BC से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, तो डिवाइड भी करेंगे तो बन जाएगा BC/ABC। AC से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले को, तो डिनोमिनेटर में इसका भी बन जाएगा ABC। बेसिकली ABC बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर में, एंड इसको हम लोग AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ABC बन जाएगा। यानी दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स एक्चुअली BC is to AC is to AB। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अगर A के लिए हम बात कर रहे हैं तो A छोड़ दीजिए, BC लेंगे। B के लिए B छोड़ देंगे तो AC लेंगे। C के लिए हम AB लेंगे। ठीक है जी, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, एंड देन फिर विल मूव अहेड विद द फर्दर थिंग्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने इनवर्स रेशियो देख लिया। इनवर्स रेशियो के बाद एक और हमारे पास रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो में क्या है, कहते हैं कि इफ A is to B, C is to D, E is to F are some given ratios, then compound ratio is A into C into E upon B into D into F। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं A upon B into C upon D into E upon F। आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। नो, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में हमारे साथ एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऑपरेशंस हैं। बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है, लेकिन जस्ट नॉलेज होना चाहिए। अब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं
if A upon B is equals to C upon D, then according to this componendo, A plus B upon B is equals to C plus D upon D. मीन्स न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर को हम कंपोनेंडो बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड इज डिविडेंडो। तो डिविडेंडो सेज A minus B upon B is equals to C minus D upon D. Then ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में हमारे पास क्या है, अगेन if AB is A upon B is equals to C upon D, तो ऑल्टरनेंडो में ये जो ऑल्टरनेट एलिमेंट्स हैं ये B एंड हेयर C, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A upon C is equals to B upon D, and fourth operation is invertendo. Now when we are talking about invertendo, if A upon B is equals to C upon D, then this implies that C upon A is equals to D upon B. तो ये हमारे पास इन्वर्टेंडो है। तो नाम से पता चल रहा है ये इन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये इन्वर्टेंडो हो गया। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, कभी यूज करने पड़े तो हम करते हैं। देन वी आर आल्सो हैविंग, अब जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है। रेशियो में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम लोग एक टर्म को चेंज करते हैं तो दूसरी टर्म ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अब क्वेश्चन हमारे पास है, A is to B is 2:3 and B is to C is again 2:3, ये बोलता है फाइंड A is to B is to C। पहले इसको देख लेते हैं। जब हमारे पास ये आ रहा है A is to B is 2:3 and B is to C is again 2:3, तो हम ABC को कैसे सेम करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द B वाले जो हमारे पास रेशियोज हैं इसको हम सेम करेंगे। कैसे? इसको इंटू 2 कर देंगे और इसको इंटू 3 कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि रेशियोज में आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या जब भी चेंज करेंगे तो आपको दोनों टर्म के साथ करना पड़ेगा। सो हेयर इट विल बी डन विद दिस, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 4:6 and this will become 6:9। अभी ये जो b हैं ये दोनों b सेम हो गए। दिस वाज द मेन थिंग व्हिच वी नीड टू डू। तो हम b के एक वैल्यू के साथ ऊपर वाली वैल्यूज को, b को हम लोगों ने कॉमन लेके चलना है, b की वैल्यू को सेम बनाना है, एंड दिस विल मेक अस a is to b as 4:6:9।
बस यही चीज हमें करनी है कि बी की वैल्यू को सेम करना है। कई बार कई लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, दिस इज ए बी बी एंड सी। तो A is to B, then B is to B, then B is to C। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। कई लोग इसको इस तरह से भी लेके चलते हैं, बट ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि हमने B की दोनों वैल्यूज को सेम करना है। Sorry, this was, I have written it wrong. It should be B upon A हाँ, equals to D upon C। D upon C। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करें एंड गिव मी द वैल्यू फॉर दिस। If A is to B is 3:4, B is to C is 5:6, find A is to B is to C। शाबाश, आप ये करिए फिर हम आगे चलेंगे। Yes, sir. 15, 20, 24. Yes, मेरा बता रहा है। we have got 15 is to 20 is to 24। This is 15 is to 20 is to 24। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे बोलते हैं कि three numbers are there such that A is to B is 4:5, B is to C is 3:5 if first number is 36, find the third number। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास, हम इसको क्या लेंगे, सबसे पहले A is to B is 4:5, B is to C is 3:5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, will multiply with this 3 and we multiply this with 5। तो हमारे पास क्या बनेगा, A is to B is to C as 12 is to 15 is to 25। Now if we talk about first number, अब यहाँ थोड़ा सा और एक चीज आ गई। फर्स्ट नंबर इज 12 पार्ट, so if we say 12 part is equals to, मैं इसको पार्ट्स लेता हूँ हमेशा। if 12 part is equals to 36, right, 1 part is equals to 3, 36 divided by 3, and we have to find out the third number। we have been asked about the third number। तो मैं थर्ड नंबर के लिए क्या बात कर सकता हूँ, थर्ड नंबर के लिए बात कर सकता हूँ कि थर्ड नंबर इज एक्चुअली 25 parts। so 25 part is 25 into 3, so that will give you 75 as the answer। so my answer is 75। तो क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, राइट, दिस इज, तो हम लोगों के पास चीजें इस तरह से पूछी जा सकती है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो हमने एबीसी का रेशियो तो निकालना ही निकालना था, डेट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद हम लोगों को फर्दर बात किया गया
कि हमारे पास क्या है। ठीक है, सो होप यू गॉट दिस थिंग। अब इसी तरह से, क्योंकि मैं पार्ट्स में हमेशा बात करता हूं, तो मैं एक और क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। हम इसको इस तरह से बोलते हैं, आप इसको देखिएगा, प्राइस ऑफ अ स्कूटी and a motorbike are in the ratio 3:5. If the difference of their price is 60,000, find the price of the bike. तो हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं, वी अगेन कंसिडर दिस एज, देखिए इसने बोला स्कूटी इज टू मोटर बाइक आर इन द रेशियो 3:5. द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेशियो इज 2 पार्ट्स, जिसकी वैल्यू हम लोगों को दी गई है 60,000. तो आई जनरली डू इट इन दिस वे, यहीं से डिफरेंस देख लिया। अब कई लोग इसको लिखते हैं 3x and 5x then 5x minus 3x. I just consider the things from here. One part is equals to 30,000 divided by 2. और इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा बाइक का प्राइस, so therefore 5 पार्ट्स की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 5 part is 5 into 30,000. That comes to be 1,50,000. So this is the answer for us. तो हम लोग इसको हमेशा लेते ही इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स हैं, हमेशा इसको हम इस तरह से ही मान के चलेंगे। ठीक है जी, एक और बात करते हैं। अब कई बार हम लोगों को ना इस तरह से बोला जाता है, two numbers are in the ratio 7:11. If their sum is 720, find their difference. So I'll be doing again it like this. CI number 1 is to number 2 are in the ratio 7:11. अब इसने बोला देयर सम, मतलब ये दोनों का टोटल 18 पार्ट्स is equals to 720. 1 part 40. is equals to 40. एंड हमें डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस इज ऑफ 4 पार्ट्स, जस्ट डू दैट डिफरेंस इन द रेशियो इटसेल्फ. 11 parts minus 7 parts is 4 parts, so we need to find out only 4 parts, that is 160. तो हम लोग इसको हमेशा ना इसी तरह से ही ध्यान में रखेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स. ठीक है, जस्ट नोट दिस डाउन, देन विल मूव अहेड. Okay, another question is a mixture of
milk and water is in the ratio 5:2. How much water should be added so that ratio of milk is to water become 5:3. It is given total quantity is 56 kg. अब देखें इसको हम कैसे करेंगे. A mixture of milk and water is in the ratio. तो टोटल क्वांटिटी है हमारे पास 56 kg. सबसे पहले हम लोग मिल्क फाइंड आउट करेंगे. मिल्क कितना है इस क्वांटिटी में. मिल्क इज इन द रेशियो 5:2. मतलब 5 हिस्से मिल्क के हैं आउट ऑफ टोटल 7 हिस्से. ठीक है ना. 5 आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट्स. So we will be writing it as 5 out of 7 parts of 56. So 7 8 it is equals to 40 kg. Then water is 2 out of 7 of 56. So that makes it 16 kg. अब ये बोलता है हमारे पास हाउ मच वाटर शुड बी एडेड. ठीक है. सो दैट रेशियो बिकम्स 5:3. नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल कि भाई यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी था दे आर इन द रेशियो 40/16. कहता हाउ मच वाटर शुड बी एडेड. लेट्स से x लीटर वाटर शुड बी एडेड. हम x इसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दिस द रेशियो बिकम्स 5:3. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. दैट्स इट. जिसके लिए हम लोग सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. सो इट इज 40 into 3 is equals to 5 into 16 plus x. 120 is equals to 80 plus 5x. This implies that 5x is equals to 40 and this implies that x is equals to 8. So this is the final answer for us. तो हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. तो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल था. हमने पहले टोटल क्वांटिटी लिया. टोटल क्वांटिटी में हमने मिल्क और वाटर चेक किया एंड देन वाटर इज एडेड टू इट एंड वी चेक कि कितना इसमें बात रही. तो a mixture of
milk and water are in the ratio 12:7. How much water should be added so that the ratio of milk is to water changes to 3:2. If total quantity was 171 liters. Come on, try it and give me the answer. शाबाश, सभी लोग ट्राई करेंगे. देखिए, टोटल क्वांटिटी इज 171. अब ये जो 171 लीटर है, इसमें मिल्क कितना है, that is what we need to find. So milk was 12 parts. So it is 12 out of total 19 parts. इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 19 पार्ट में से 12 हिस्से जो थे वो मिल्क के थे of 171. So this will be cancelled. This is 9. So we get 108 liters of milk. And बाकी का जो बचेगा वो हमारे पास वाटर होगा, और जिसको आप 7/19 से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी चेक कर सकते हैं. तो दिस इज 63 लीटर्स. अब हमें पता लग गया जो एक्चुअल क्वांटिटी थी, जो इनिशियल क्वांटिटी थी, उसमें हमारे पास 108 लीटर्स मिल्क था और 63 लीटर वाटर था. तो बस अब हम इसको लेके चलेंगे कि भाई ये मिल्क एंड वाटर तो हमें पता चल गया, ये 108 लीटर्स मिल्क था एंड 63 लीटर वाटर था. पर आगे ये पूछता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए. तो जितना पानी x लीटर्स पानी मिलाया जाए ताकि ये रेशो 3:2 का बन जाए, ये पूछ रहा है कि 108 और 63 में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, जो मैंने येलो से मार्क किया, सो दैट ये रेशियो 3:2 में चेंज हो जाए. देन यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. 2 into 108 is equals to 3 into 63 plus x. This becomes 216,189 plus 3x. 216 minus 189 is equals to 3x. This is 27 is equals to 3x and 9 is equals to x. So that is the final answer for us. This is the answer and यही हम लोगों को find out करना था. ठीक है जी. So got it. आगे आगे. तो ठीक है जी, आपके साथ असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर की है. आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, उसमें से ट्राई फर्स्ट 15 क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम लोग इससे आगे चलेंगे. नेक्स्ट टाइम कुछ और नई नई चीजें सीखेंगे. तो आप इस लेक्चर को गो थ्रू जरूर करिएगा. इट विल रीच टू यू बाय इवनिंग. सो बाय फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर एंड जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद सर.